Hi guys, welcome back to the channel. You're with me and Arun Sharma, and today's session I'm going to talk to you about LR prep from March. What are the key things that you need to remember, or what are the key things you need to understand when you're trying to go for logical reasoning preparation from March. Just let me get my stuff organized here. Right, so I hope you are able to see me and hear me now. The first thing you need to understand when you are, and there are few messages I want to give you, maybe around 5-6 messages which I want to give you when I am talking to you about logical reasoning preparation mein kya karna chahiye and how you should prepare. And maybe I'll also give you a brief insight into the book, into how to use my book. And by the way, mere LR book ka fresh edition is going to come in May this year. So if you are, if you are using the previous edition, I mean, it's always a trade-off between being able to utilize your time versus using the latest edition. So that's always there. But coming back to so if you are using the previous edition, or if you don't have the edition already, then go for the latest one, because that includes the latest questions, etc. So वो aspect तो है, but let's focus back on the topic at hand. And I think I can see a few of you have not joined the session, or some issues with my lights. Anyway, so LR के बारे में जो 4-5 messages हैं, and I'm just waiting for the live stream to actually get hotter with more people joining in. And I hope you in the meantime we can just chit chat a little bit in the first couple of minutes. Those of you watching the video, maybe you can watch from the 3 to 4 minute mark when you are watching. So coming back to the point I was making, logical reasoning का जब बात करते हो तो obviously it's part of the DILR section. So let's get to the main content now. So it's obviously part of the DILR section, but at the same time, I always advise people that you should treat logical reasoning as a separate subject. Don't mix it with DI to start with. एक factor है इसमें which you should understand, and a lot of people would agree to me when I say that. And if you have a little bit of experience with the CAT, you will also realize this, that when you are solving the CAT nowadays, बहुत बार when you come out of the CAT paper after finishing the exam, you don't know whether you solved LR or you solved DI. So there are a lot of commonality now between the DI and LR questions that are there, and there's a lot of merging of those questions. But from a pedagogy viewpoint, I always tell people कि तुम उसको last, मतलब I mean ultimately DI और LR जो है आजकल जो हो रहा है, there's still some core DI questions that you will come across. There's still some core LR questions. But by default there is a merging of DI and LR at the end jaake. So but when you're preparing, you should prepare for LR separately and DI separately to start with, because you can only solve those merged questions where you are solving a intense LR question with a lot of quantitative information inside it, or solving a very data interpretation kind of question which has a lot of रीजनिंग एनालिसिस इनसाइड इट. उस टाइम पता नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन एलआर में जाएगा कि डीआई में जाएगा. तो वो एस्पेक्ट होता है विद अ कपल ऑफ सेट्स इन बिटवीन इनसाइड द कैट. बट एट द सेम टाइम द रीजन व्हाई यू शुड ट्रीट डीआई एंड एलआर एज सेपरेट सब्जेक्ट्स, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू मेक, दैट इज treat DI and LR separately to start with. The reason is because to be able to solve two reasons actually. One, to be able to solve at that level, you first need to understand the basic level. जब तक basics तुम नहीं कर पाओगे और basic level पे solve नहीं कर पाओगे, तब तक उस level पे solving possible नहीं है. So you always start from the base. You build a base first, and gradually you will start seeing that over a period of time the DI and LR starts merging in the exam. So that will happen by natural. And in the process we also talk about in preparation, or I tell people about their preparation plans, is that the process you should focus on is कि okay, पहले LR के skills build करो, parallelly DI के skills build करो, और लास्ट में जो merger होता है वो लास्ट 100 sets में तुमको अपने आप समझ में आएगा कि what kind of merger it happens, right? And basically both DI and LR are about problem solving skills. So these, I mean, one difference between your preparation for DILR versus your preparation for quants
is that there are no chapters. You can't sit down and study chapters today. You can't say कि आज मैं time split distance पढ़ रहा हूँ. उसी तरह से you can't say कि आज मैं arrangement puzzles पढ़ रहा हूँ, because there's nothing called a chapter called arrangements. Yes, there is a question type called arrangements, but there's no chapter called arrangements. So and individual question types में individual skills लगते हैं. So वो you build those skills as you go on, and as you start solving questions on the topic. So you can do that, but please remember this, that in data and prediction and logical reasoning, most of what you learn will be through problem solving, right? So when you come back to logical reasoning, DI ka I'll take a separate video, and this video is about logical reasoning. So when you come back to logical reasoning and preparing for logical reasoning, you have to split your portion into two parts, LR for cat and LR for omits. So LR for cat is the set of puzzles and the set of question types which are very critical for cat, which you see all the time coming in the cat exam, etc. And they also in a lot of ways, the LR for cat is also important from the other omits exam also, because these question types that you see here on the LR for cat slide and the LR for cat list of topics, those question types you will also see in the omits. But apart from that, the other part of it, LR for omits, has certain question types which don't normally appear in the cat, right? So that's why you should first split your preparation into LR for cat and LR for omits. And this video is about LR for cat more, so I'll be focusing more on that part, what you should be doing, etc. And I'll also talk a little bit about LR for omits का क्या strategy होना चाहिए तुम्हारा preparation का, so that during your preparation you also prepared for all the other exams, because most of you obviously don't just give the CAT exam, you also prepare for the other exams like XAT and IFT and the other management exams like CMAT and CET Maharashtra and even MAT for that matter, right? So coming back, I think just a second, yeah. Right. So coming back, so when you talk about LR for cat, LR for cat is basically comprised of around 8-9 kinds of question types. The first broad question type is puzzles, and when you talk about puzzles, there can be different themes inside puzzles, whether it's the arrangement theme, the ranking theme, the team formation theme, the generic puzzles theme, or the quantitative reasoning theme. So and if you go into my books also, you will see that I have split my puzzles chapter or my puzzles into these 5 different types of puzzles. So when you start off, you start gaining a perspective about each of these question types, about each of these question structures. So what will happen typically, puzzles by default are puzzles only, लेकिन एक ranking puzzle may the kind of clues will be different from the kind of clues that you will see in an arrangement puzzle. And what you need to understand very, very importantly is that when you talk about puzzles or when you talk about LR inside the exam, LR में एक thumb rule होता है कि अगर तुम LR में जितने clues होते हैं, LR questions are always built like this. You have some basic information, then you've got clues. Clue 1, clue 2, clue 3, clue 4, clue 5, etc. So in logical reasoning, if you are able to solve all the clues, if you are able to use all the clues that are there in a logical reasoning question, then you will be sorted. You will be able to solve the question completely. So that's what it is all about. So the key for you is to be able to use all the clues which are there in a LR question. Be able to use all the clues which are there in the LR question. So what you do when you're preparing for LR, for logical reasoning, is you try to build your ability to use the clues in arrangements, use the clue types and understand the different kinds of clues that are there in each of these question types. So whether it's arrangements or rankings or team formations or generic puzzles or quant reasoning, each of them will have a specific way in which they write their clues. So as you get more experience in these question types, you will start understanding the clues better, and broadly there are only 2 or 3 hurdles in your ability to solve or use a clue. One is you don't understand language. Second is you don't understand how to use. You understand the language, but you don't understand how to use and when to use that particular clue while solving a question. So ये दोनों चीज़ तुम्हारा automatically, by default, as I'll tell you as we go ahead,
by default, as you start seeing more and more questions and hence more and more clues, as your problem solving experience goes up, your ability at these three things, understanding the language, understanding the when to use and the how to use that language or that clue, will automatically start going up. A person who solved only 20 sets in LR versus a person who solved 300 sets in LR. A person who solved 20 sets in LR would have seen around 100 clues. A person who seen 300 sets in LR would have seen 500 clues, 1000, 1500 clues. So obviously, अगर तुम बहुत dumb नहीं हो and you are preparing well, so after seeing 1500, 2000 clues, the chances that a clue will beat you because the language is very complicated or you don't instinctively understand where to use it, वो सब disappear कर जाता है. So coming back to the portion, the first part of LR for CAT are the puzzles, puzzle topics. So puzzles में ये 5 तरह के puzzles तुमको करना पड़ेगा. By the name themselves, you can make out what it means. Arrangement puzzles are puzzles which have an arrangement element inside them. Ranking puzzles are puzzles which have a ranking element inside them. Team formation puzzles are puzzles which have a team formation element inside them. Generic puzzles are puzzles which have, generic matching puzzles are puzzles which can be built on any aspect, on any matching 5 people, 5 places, 5 kinds of cold drinks and 5 kinds of jobs, etc. So those kind of generic puzzles. So usme there might be an element of team formation, there might be an element of arrangements inside this. So this is the mother of all kinds of, all puzzle kinds of questions. But it's a good idea to start with each of these puzzle types. And then the final one is quant reasoning, which is puzzles, reasoning puzzles, LR puzzles, which have a little bit of numerical elements inside them. So if you have LR puzzles with a lot of numericals inside them, so that is what is discussed as or talked about as quant reasoning. And in fact, as I was saying, beyond a certain point, you realize that a reasoning question with a lot of quantitative element and a DI question with a lot of reasoning element, this is the merger between the two between the two topics. So this is the gateway between LR and DI. But anyway, let's keep going. And then you also have network diagrams, the other topics, LR for CAT mein. You got network diagrams, you got sets and Venn diagrams, set theory and Venn diagrams, you got games and tournaments, and you got cubes and dice. And then you got what is called as miscellaneous. So miscellaneous ka matlab ye hai ki you can always, in LR set, in the exam, you will always have an element of surprise. So be ready for that. Matlab you cannot say that मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें जो इन चैप्टर्स में नहीं फॉल करता है. So there is always an element of surprise in some this thing, and CAT has that element of surprise in its exam always. So CAT always has that element of surprise in the exam where it throws you off preparation. So CAT 21 mein you had that set on parking slots in a mall, which does not fall into any of this conventionally. It's just a plain puzzle which is set in a completely different environment, and you have to utilize your on-the-spot thinking skills to be able to do it. So there will always be a miscellaneous element inside it. And when you prepare for LR, I'll come to the omit chapters. When you prepare for LR, there are 3 things, or 3. I call these the 3 x-axis of preparation. There are 3 x-axis of preparation which you need to run through. So what you do is, initially you keep a target of around, for each of these question types, you keep a target of around 15 to 20 sets. When I say LR questions, they are always sets of questions. One set has 5 to 10 questions, 5 to 6 questions normally, sometimes 4 also. So your initial thought has to be keep each of these question types में 15 से 20 sets solve करना है, 15 से 20 sets solve करना है, so that on these 9 chapters, these 5 and these 4, on these 9 chapters overall, my problem solving experience goes to somewhere between 150 to 180 sets. This is the challenge to start with. And then once you have finished these 150 to 180 sets, उसके बाद LR solving should be mixed, because exam में mixed आता है. It does not come with an announcement कि अभी अगला puzzle sets का है और अगला puzzle network का है. तुमको वहाँ पे evaluate करना पड़ता है कौन सा है. And that evaluation and that reaction will only be if you have an element of mixed
a decent element of mixed problem solving. So my advice to people is that when you start preparing, you start off with 3 axes of preparation. One is, and you keep a track. I mean, how do you evaluate whether your LR prep is going on track? I'm coming to your questions. I'll come take your questions towards the end, those of you alive. So how do you evaluate whether your LR preparation is on track or it is not? How do you evaluate that? So that's something that you need to understand. Just give me a second, just be back. So that's something that you need to understand that, okay, LR prep तुम्हारा लाइन पे चल रहा है कि नहीं और तुमने कितना काम किया है, because there are no chapters. Quants में तो चैप्टर से मेजर हो जाता है. वर्बल में तुम नंबर ऑफ आर्टिकल्स पढ़े हो, कितना वोकैबुलरी याद किया हो, उससे तुम मेजर करते हो. बट LR में the measurement is basically in terms of these 3 numbers. How many sets of assisted problem solving have you done? How many sets of self problem solving have you done? And how many sets of self problem have you tried? And how many sets of self problem solving have you solved? So you'll always recognize this is one thing that you need to understand about all problem solving that you do for CAT and any aptitude preparation exam, that there will always be a gap between how many sets you have tried or how many questions you have tried and how many questions you have solved. So there will always be a ratio or a percentage. So if you have tried 100 sets, you might, I mean, through your preparation, if you're solving around 15 sets a week, 6-7 weeks into your preparation, you might reach a situation where your self problem solving tried is 100 sets and your self problem solved is only 70 because you were not able to solve 30 sets. Or ये natural है. So don't get too perplexed with not being able to solve a question. I get a lot of messages from people कि सर आपका अरेंजमेंट चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, उसका LOD2 नहीं सॉल्व हो रहा है, LOD3 नहीं सॉल्व हो रहा है, वो तो नहीं होने वाला है. Because LOD2 of arrangements or LOD3 of arrangements is supposed to be solved by somebody who's got 300 sets of experience. So अगर तुम पहला चैप्टर उठाए हो और तुमने 10 सेट सॉल्व किया है अरेंजमेंट का और LR में तुम्हारा नेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस 10 सेट का है, तो तुम 300 सेट वाले क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर पाओगे. जो स्किल 300 सेट वाला स्टूडेंट बिल्ड किया है, वो स्किल अगर रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चन में, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. सो डोंट गेट टू पजल्ड बाय कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और सॉल्व नहीं हो रहा है. सो देयर विल ऑलवेज बी अ रेशियो एंड वॉच दिस रेशियो एंड कीप इंप्रूविंग दिस रेशियो. सो व्हाट हैपेंस इज समथिंग लाइक दिस हैपेंस. तुमने अगर एज अ सेट पहले 20 सेट्स पर चैप्टर कर लो एवरेज, और मेरे बुक में उतने सेट्स हैं, सो यू विल बी getting to a 180 set benchmark, and you mix this between assisted problem solving, that means you're watching a video, you're watching or you're reading the solution in my book or whatever, but it has to be active assisted problem solving, not passive. By active I mean you should keep solving along with the video or along with the text. It should not be कि सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको, right? So अगर 180 sets तुम chapters में पहुंच जाते हो और उसके बाद mixed का करीब 150 sets करते हो, तो क्या होगा कि ये 330 सेट्स का जो तुम्हारा ट्राइड का बेंचमार्क है कि तुमने 330 सेट ट्राई किए, तो 330 सेट ट्राई किए तो सॉल्व हो सकता है तुम्हारा 200 ही हो, बिकॉज जो डिफ़िकल्ट सेट्स हैं वो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा स्किल लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल तुम चौथा सेट उठाए या 8वां सेट उठाए, सेट 8 यू पिक्ड अप, एंड दिस सेट इज समथिंग दैट अ पर्सन हु इज डन 200 सेट्स उसके लेवल पे सॉल्व होता है वो सेट. अगर ऐसा सिचुएशन है सेट 8 का, तो इन दैट सिनेरियो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, बिकॉज तुम्हारा एक्सपीरियंस तो 7 सेट का ही है. यू जस्ट सॉल्व सेट 1 टू सेट 7, तो सेट 8 तुमसे सॉल्व नहीं होगा. सो व्हाट शुड यू डू? देयर आर 2 ऑप्शंस. वन इज गो टू समबडी एंड आस्क इसको कैसे सॉल्व करना है, बट दैट ऑप्शन इज लाइक यू गो टू अ जिम टू बिल्ड योर मसल्स एंड यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट अ वेट. सो यू आस्क द ट्रेनर कि तुम उधर से उठाओ, मैं इधर से उठा देता हूँ, और हम लोग साथ में उठा लेते हैं, और तुम्हारा काम हो गया, तुमने वेट उठा लिया, बट तुम्हारा काम एक्चुअली नहीं हुआ बिकॉज तुम्हारा मसल्स कहाँ बना है. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? एंड so that's what you remember. So what has to happen is that you will have a lot of these red marks in these questions tried, and once you reach that 250 300, so what happens, even if you had a 60% solving rate, 330 सेट्स में 200 सेट तुम सॉल्व कर लोगे, राइट? 130 सेट सॉल्व नहीं होंगे. तो होगा क्या कि उसके बाद अगर सेकेंड राउंड में तुम वापस आते हो और सेट 8 पे आते हो, तो नाउ यू आर समबडी who's stronger because you have gained experience of 200 sets, and 200 सेट कोई भी सॉल्व करेगा तो उसका स्किल लेवल वहाँ नहीं रहेगा जो उसका स्टार्ट में था. मैं अगर 200 सेट अभी यहाँ से सॉल्व करूँ एट माई लेवल, तो मेरा स्किल लेवल सुधर जाएगा,
in LR or whatever area. So that's something that you need to understand. There's a dividend to problem solving that you'll gain out of solving these questions. There's also a dividend, these 130 questions which you could not solve. It may be dividend, there's some learning inside it also, because you at least now know what you are not able to do. So these are things that you need to understand. So what happens then, once you are done with this, structure, as you come back to those questions, don't get too puzzled. LR is not about 1000 sets. 1000 सेट मतलब अगर वो अप्रोच ले लेते हो कि जो सॉल्व नहीं होगा किसी से पूछ लेते हैं, तब तो 1000 सेट के बाद भी तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन में डाउट आएगा, और जो कि होता है बेस्ट, एज अथर्व इज सेइंग कि कैट का डिफिकल्टी लेवल एंड ट्रिकीनेस इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली. दैट्स एग्जैक्टली ट्रू. कैट का डिफिकल्टी लेवल and trickiness is so much that अच्छे अच्छों को डाउट्स में, आई मीन योर माइंड गेट स्प्लिट इन डाउट्स कि इसका क्या करना है, इस स्टेटमेंट का क्या करना है. एंड इट हैपन्स टू पीपल एट माई लेवल ऑल्सो. 99.99% परसेंटाइल वालों का भी माइंड को स्प्लिट कर देता है वो कि व्हाट डू यू डू विद दिस, एंड यू हैव अ डाउट. सो व्हेन यू हैव अ डाउट इन द एग्जाम, you have to have a mechanism in your mind to solve that doubt. So if you're through the year, your doubt clearing mechanism has been कि भैया से पूछ लेते हैं और सर से पूछ लेते हैं, it's not going to work in the exam. So you have to build your independent ability to solve, and that's what I tell my students at Mindworks also, कि मेरा objective तुम्हारे साथ है कि मैं तुमको independent of me बनाऊँ, not dependent on me. अगर मैं insecure teacher हूँ तो I'll always want my student to be dependent on me all the time, कि मेरा क्लास होगा तभी तुमको समझ में आएगा. बट इफ़ आई एम अ सिक्योर टीचर एंड आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द जयकार ऑफ स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई विल डू देन इज आई विल से दैट ओके, आई वांट टू मेक यू इंडिपेंडेंट ऑफ मी, आई वांट टू मेक योर लर्निंग एंड योर सॉल्विंग इंडिपेंडेंट ऑफ मी, बिकॉज इनसाइड द एग्जाम दैट्स व्हाट इज गोइंग टू वर्क. सो दैट्स द फॉर्मेट दैट यू हैव टू डू. सो व्हाट यू डू इज, व्हाट विल हैपन व्हेन यू कम बैक टू ऑल दीज सेट्स, तुम एक क्वेश्चन बैंक बना लो कि दिस इज द क्वेश्चन बैंक यू नीड टू सॉल्व. तो मेरे बुक को अगर मैं कोई यूज़ कर रहे हो LR के बुक में, तो 15-20 सेट चैप्टर वाइज है, करीब 15 से 20 सेट ईच चैप्टर में दिया हुआ है मैंने. और उसके बाद वंस यू फिनिश दैट, दोज 15-20 सेट्स ऑफ LR फॉर कैट, वंस यू फिनिश दैट पार्ट, देन यू कम टू द मिक्स्ड क्वेश्चन बैंक्स, द LOD 1, 2, 3 एंड द मॉक टेस्ट, जिसमें करीब 100-150 सेट और हैं. तो वो सब मिला के अगर तुम 330 सेट को अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क बना लेते हो. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन इन द बुक इज दैट फॉर दीज 330 सेट्स आई हैव नॉट यूज्ड द ओरिजिनल कैट क्वेश्चंस or the original ZAT or IFT question. I've made sets similar to those so that you get that experience, because I want one thing more to happen. What happens is this preparation journey that you are talking about, कि वो 330 सेट्स तुमने उठा लिया कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक है, पहला राउंड में 200 हुआ, 120 हुआ, जो भी हुआ, सेकेंड राउंड पे आओ, इसमें से बहुत सारे सेट्स जो तुमसे पहले नहीं हुए थे वो हो जाएंगे, बिकॉज योर स्किल इज हायर नाउ. यू विल बी एबल टू सॉल्व देम द सेकेंड टाइम अराउंड. कुछ सेकेंड टाइम भी नहीं होंगे, तो उन पे वापस आओ, और 3 ट्राइज के बाद देन यू हैव अ डाउट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. 3 ट्राइज एंड 90% सॉल्व पे. सो 330 सेट्स, 30 सेट्स बच गए, और हर सेट को 3 बार ट्राई कर लिया. पहले बार नहीं हुआ, सेकेंड बार नहीं हुआ, थर्ड बार नहीं हुआ. Then you come and ask the doubt for the last 30. You can ask, and I'm open to solving some LR doubts for you here also, but with that perspective. So preparation structure should be this. So once you reach this point, and once you reach this structure, इसके आगे का जो preparation है, that is the mock tests and the previous year questions. So my advice to you is don't use the previous year question the first 300 sets. Because previous year question जब practice के लिए use करते हो, you already need to have done some work, so that, because what previous year questions gives, they are brilliant practice material, yes, but if I use my previous year questions here in the first 50-70 sets, first 100 sets, a few previous year questions देख लिया वो अलग बात है, but अगर पूरा previous year question मैं first 100 sets में conclude कर दूंगा. अब जैसे देखो CAT 22 में हर स्लॉट में भी दो LR के सेट मिलेंगे तुमको, राइट. तो 6 सेट तुमको मिलेंगे एक साल में. तो कैट 17 के पहले तो पेपर्स नहीं था, तो तुमको मिला जुला के 17 से लेके 22 जाओगे, तो यू विल गेट मे बी 30-40 सेट्स ऑफ सॉल्विंग एक्सपीरियंस अवेलेबिलिटी. एंड देन इफ़ यू गो फ्रॉम कैट 2008 टू कैट 99, जो पेपर्स उसके पहले के अवेलेबल है, उसमें जाओगे तो है ना, तो 50 सेट्स. तो प्रीवियस क्वेश्चन कैट के तुम्हारे पास 100 ही हैं, ठीक है. तो उनको अगर यहाँ पे यूज़ कर लेते हो तो एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है
गैप ये बन जाता है कि जब तुम मॉक टेस्ट में जाते हो, व्हेन यू गो इनटू द मॉक्स आफ्टर योर प्रिपरेशन ऑफ 3 to 4 months, यू स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, और तुम्हारा स्कोर अगर नहीं आता है, अगर स्कोर आ गया एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ वर्क कर गया, स्कोर नहीं आ रहा है जो तुम चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि 110 स्कोर करें, तुम्हारा स्कोर 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो यू नीड टू वर्क आउट वेयर आई नीड टू वर्क. सो व्हाट हैपेंस देयर, what is happening in your actual exam questions? Are you able to solve them? Are you able to solve them under time pressure? Are you good enough for that? Do you need to work more on solving quality, or do you need to work more on time, the time of solving? That all that feedback the question will give you. A simulated question can never give you that feedback, because it is not it's a simulation. It can give you a like for like this thing, but it's not the real thing. So the real questions you should only use after you do this 330 sets. And typically what I tell people is that अगर तुम on an average 15 to 20 sets का target रखते हो every week, तो ये करीब 16 से 20 week का काम है, which is parallel to your quants work, which is also, I mean, quants का first round of preparation is around 16 to 20 weeks. So that's what the work is, and this is what you should be doing. Parallelly, the last thing that I want to talk to you about here, parallelly, the last thing is the reasoning for omits. तो इसका ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, because reasoning for omits में करीब 8-10 question types हैं, which you can see here: blood relation, sequence series, input output, crypt arithmetic, coding decoding, direction test. Then you also have statement assumption, statement conclusion, statement courses of action. ये 9-10 question types हैं. ये दो चीज़ करेगा तुम्हारे लिए. पहला, अच्छा इसमें और 2-3 है, syllogisms, which I forgot to write. You got syllogisms, you got logical deductions, you got binary logic. ये 12, 13, 15 टाइप के क्वेश्चन होंगे सब मिला के, अगर सब कुछ खुद के निकाल लो तो दिल भी 15 तरह के क्वेश्चंस. तो ये 15 तरह के क्वेश्चन जो है, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिकॉज सिलोजिज्म इन एंड आउट इज व्हाट 4 hours. इन एंड आउट मतलब तुम स्टार्ट कर रहे हो टू एंड कर रहे हो, यू इज़ जस्ट 4 hours. उसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. अगर तुम 50 से 100 क्वेश्चन असिस्टेड प्लस सेल्फ सॉल्व कर लो, और जो तुमसे नहीं हो रहे हैं वो तुम असिस्टेड में समझ लो, तो यू आर डन. मतलब यू डोंट नीड कि उसमें 3 महीना प्रिपेयर करना, 6 महीना प्रिपेयर करना है. तो यू कैन जस्ट कीप लेट्स से बिटवीन जुलाई टू नवंबर, जब तुम्हारा कैट का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तुम मार्च में स्टार्ट कर रहे हो, 16 से 20 वीक में तुम्हारा DI का 300 सेट, LR का 300 सेट, क्वांट्स का 20 चैप्टर 20-22 वीक में कंप्लीट अगर कर लेते हो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में तुम्हारे पास टाइम रहेगा कि बीच बीच में एक दिन कभी मंडे को बैठ गया कि सिलेबस आज खत्म कर लेते हैं, ट्यूसडे को बैठ गया कभी कि लॉजिकल डिडक्शन के 50 क्वेश्चन देख लेते हैं. सो वो काम खत्म हो गया, राइट. एंड व्हेन दे कम इन द ओमेट्स, जब ओमेट्स का टाइम आएगा तो ओमेट्स के 1 हफ्ता पहले उनको प्रैक्टिस कर लो. सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ऑल दिस. और एक चीज़ और है इसमें, जैसे क्रिप्ट अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया था कैट 2020 में. सो कभी कभी इसके क्वेश्चंस तुम्हारे मेन स्ट्रीम कैट में आ जाते हैं, जो कि तुम्हारे मिसलेनियस को फीड करेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ द ओमेट questions. So that's it. So that's what I wanted to tell you here, right? So your questions. Satyam says, should I join any institute or just have self study? देखो, एक simple thought है मेरा. अगर तुम मेरे पास आते हो, you come to Mindworks, तो we have a system. I mean, I'm not going to jump at you and tell you कि आज से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के solve कराऊंगा. नहीं, because if I'm thinking good for you, तो मेरा टारगेट है कि तुमको मेरे को इंडिपेंडेंट बनाना है. सो माई डे 1 मैसेज टू यू विल बी कि काम तुम्हें को करना है, मेरा गाइडेंस मिल जाता है, मेंटरशिप मिल जाता है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू दैट इज यू डोंट डू अ फ्यू मिस्टेक्स एक्सेट्रा. सो इफ़ यू आर लुकिंग एट अ कोर्स, और ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन करना है तुम पे डिपेंड करता है. ऑफलाइन का एडवांटेज अपना है, डिसएडवांटेज अपना है. ऑनलाइन का एडवांटेज अपना है, डिसएडवांटेज अपना है. ऑनलाइन में यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन ऑन योर ओन. ऑफलाइन में तुम्हारा डिसिप्लिन थोड़ा बहुत वो फिजिकल इमर्शन से आ जाता है. सो दैट्स अप टू यू, राइट. वी हैव आवर बैचेस, ऑफलाइन बैचेस एट कॉनॉट प्लेस, एंड ऑनलाइन बैचेस ऑफ कोर्स वी हैव एट माइंडवर्क्स, राइट. सो या Atharv is asking me, just keep on solving more and more questions. It's not about getting correct answers. Yeah, that's what you need to do. और in fact, I was proud to, ये वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे. मैंने आई थिंक जनवरी में
after the ZAT released, XLRA released the paper, तो मैंने एक live session लिया था, sitting on my desk, not here, not on this thing, sitting on my desk. I had taken a live session of the, before XLRA had given the exam and given the paper out and the answer keys out. So I had taken a live session, and I'm proud to announce that I solved 25 questions verbal. Quants solve करना तो easy है, उसमें तो 2 + 2 4 है, तो 4 ही आंसर है. I solved 25 questions on verbal, जिसमें से 24 were right. So that precision is something that you need to build. Your ability to build that. वो precision अगर तुम quants DI और LR में ले आते हो पहले, और verbal में भी वो precision ले आते हो. I'll talk about verbal strategy in my next video, right? So that precision is something that you need to understand and that you need to build in your solving. So the other thing that people ask me is कि should I focus on speed or should I focus on accuracy? I say first focus on accuracy. पहले चलना सीखते हो, बाद में दौड़ना सीखते हो, right? So you learn to walk, then you will learn to run. अगर तुम पहले day 1 पे कोई तुमको बोलता है कि मैं तुमको दौड़ा दूंगा, तो वो तुमको झूठ बोल रहा है. So don't focus on that, right? धीरज, देखो LR में is there anything to do better at DILR? Getting overwhelmed with the data and the questions. So that's what I said. जब DILR को prepare करते हो, तो what you do is you prepare both DI. You prepare your DI preparation in a separate box, LR preparation in a separate box. दोनों का the target should be 250-300 sets of DI, 250-300 sets of LR. And then for both of these, you go into the previous year questions and the mock questions. तो जब यहाँ पे पहुँचोगे, तो तुमको automatically ये दिखने लगेगा कि ultimately इसका जो skills build हुआ तुम्हारा और उसका जो skills build हुआ, वो दोनों जाके merge कर रहा है in the previous year mocks. वो दोनों skills जाके merge कर रहा है in the previous year mocks. So this is something you will see all the time, right? In DI and LR. So the idea is that when you talk about LR, the key in LR is clue usage. Thumb rule is if you can use all the clues in an LR question, the question will get solved. CAT का कोई भी पुराना question उठा के देख लो, LR का question है या LR ज़्यादा LR है कम DI है, तो question अगर तुम उस question के clues को interpret करके उसको सही order में use कर सकते हो. So 3 things, as I told you, there are 3 hurdles why you can't solve an LR question. One is तुमको clue समझ में नहीं आ रहा है, जो कि तुम 1500-2000 क्लू के थ्रू चले जाओगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा. एक क्वेश्चन में 5-7 क्लू होते हैं, 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसके बाद PYQs और मॉक टेस्ट के 200 सेट्स और कर लो, तो तुम 2500-3000 क्लूज देख लिए होगे. तो 3000 क्लू जिसने देखा है, अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ तो मेरे को बोलो कि एक ऐसा क्लू लिखिए जो X को, जो स्टूडेंट X है उसको सरप्राइज़ कर दे, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि स्टूडेंट X ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो अगर मेरे को आंसर मिलता है कि स्टूडेंट X ने 25 सेट सॉल्व किए हैं, तो मैं 15-20 तरह के क्लूज, 25-50 तरह के क्लूज लिख सकता हूँ जो उसको कंफ्यूज कर देंगे. लेकिन अगर मेरे को आंसर मिलता है कि स्टूडेंट X जो है उसने 400-500 सेट किए हुए हैं, 2500 क्लूज देखे हुए हैं, तो देन आई टेल माई सेल्फ कि ये तो बहुत मुश्किल है इसको कन्फ्यूज़ करना लैंग्वेज से. तब मैं उसको कन्फ्यूज़ कर सकता हूँ बाय ऑर्डर कि कहाँ पे तुम उस क्लू को यूज़ करो, एंड बाय ऑर्डर व्हेन एंड हाउ, कि कैसे उसको यूज़ करना है. सो दीज 2 थिंग्स पे कंफ्यूज कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट कंफ्यूज दिस थिंग. सो DILR, देखो DILR क्वेश्चन आर टू लॉन्ग, दे आर, एंड यू हैव टू बिल्ड दैट एबिलिटी, बिकॉज वो 40 मिनट्स इनसाइड द एग्जाम तो DILR ही करोगे ना. सो दैट्स द आयरनी. यू हैव 3 स्लॉट्स ऑफ 40 मिनट्स इन द एग्जाम इन CAT, और 40 मिनट्स ऑफ DILR में तुम्हारा वर्बल का प्रेप साइकिल और तुम्हारा क्वांट्स का प्रेप साइकिल, ये दोनों नहीं हेल्प करने वाला तुमको. ओनली द DILR प्रेप साइकिल इज गोइंग टू हेल्प. So that's why you have to understand the prep cycle and do it, right? So that's what I wanted to talk about. So this is the structure and this is the strategy. So LR में clue usage is the key. So अगर कोई मेरे को एक लाइन में बोलता है, एक वर्ड में बोलता है, क्या मेरे को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? क्लू समझते हो, क्लू को ऑर्डरिंग कर पाते हो, और क्लू को कैसे यूज़ करने निकाल पाते हो. एंड सेंट्रल स्ट्रक्चर्स जो LR के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक सेंट्रल टेबल बनता है, उसको तुम यूज़ कर पाते हो कि नहीं. तो ये 4 की पॉइंट्स हैं वेदर यू कैन सॉल्व एन LR क्वेश्चन. DI में द स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट, वहाँ पे वेरिएबल्स का खेल है. आई विल टॉक अबाउट दैट व्हेन आई डू डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट? सो और कोई क्वेश्चंस?
या यू कैन ज्वाइन सत्यम नाउ, अभी ज्वाइन कर सकते हो। टिपिकली 4 से 5 महीने में तुम पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, एटलीस्ट 70% पोर्शन भी कंप्लीट कर लो तो मॉक्स में जा सकते हो। अगर तुमको, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, एक जो वो है जो 16 से 20 हफ्ते में पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे जो है वो हैं जो 20 से 26-27 हफ्ते लगते हैं, तीसरे वो हैं जो 27 से ऊपर, जो और वीकर हैं, एप्टीट्यूड उनका और वीक है तो 27 से ऊपर हफ्ते भी लगते हैं टू कंप्लीट द पोर्शन। सो अगर अभी स्टार्ट करते हो मार्च में, तुम कौन से वाले कैटेगरी में आते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर अभी स्टार्ट करते हो मार्च में, तो अगर तुम 16 से 20 हफ्ते वाले स्टूडेंट हो कि 20 हफ्ते में तुम कवर कर लोगे, तो तुम्हारा 4 साढ़े 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड मे बी मिड जुलाई। मार्च का आधा बचा हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सो जुलाई एंड तक तुम्हारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम 26 हफ्ते वाले हो तो वो सितंबर तक जाएगा, लेकिन तुमको टेस्ट जुलाई से स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो तुम फिर 70%, 60%, 70% कंप्लीशन पे टेस्ट स्टार्ट करोगे। अगर तुम 30 हफ्ते, 32 हफ्ते वाले हो तो तुम शायद 50-60% पे टेस्ट स्टार्ट करोगे। दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? सो राइट, what should I do this whole year? Just having preparation, gap of more than gap. Ideally, I don't advise people to build a gap consciously, but I'll talk about that maybe in a separate video. मैं एक छोटा सा क्लास लूँगा जिसमें मैं गैप ईयर एक्सेट्रा के बारे में बताऊँगा कि how do you take care of that, right? So I hope you enjoyed this. This helped you, all of you, and I'll be back soon. Or I'm trying to be regular on YouTube. At least 4-5 times a week you'll find my live class. और क्लास में या तो शाम को 7-8 बजे लूँगा या रात को 10-11 बजे लूँगा. Typically these 2 time slots I'm keeping. So you can just press the bell icon and subscribe to the channel, or press the bell icon of the channel so that you come to know when I'm live, so that you can come in. Right? Vikrant says, in previous papers of CAT, I was able to solve 2-3 sets easily, but in CAT 22 slot 1, देखो CAT 22 slot 1 का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो था ना, वो उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर बदल दिया था, which nobody had seen that data structure. I'll talk about that. I'll do some solving of actual CAT questions. तो वो भी करने वाला हूँ मैं चैनल पे. So तुमको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर बदल दिया था इन्होंने. चलो, thank you so much. I hope you enjoyed this session, and I'll be back tomorrow. Bye bye. Maybe I'll be back tonight with some questions. देखते हैं. So just press the bell icon. मेरा थोड़ा schedules haywire रहता है, इसलिए मैं एक fixed time रोज का नहीं कर पाता हूँ. But typically I'll try to be either 7 to 8, और मैं अपने post पे डाल दूँगा. अगर मैं live जा रहा हूँ तो और क्या कर रहा हूँ तो मैं I'll try to put a post at least a couple of hours before it, so that you can understand. Right? चलो, ठीक है. So thanks a lot everybody. Thanks for keeping the faith, and I'll be back. Bye bye.